Hello guys, welcome to English Gyan, your ultimate destination to learn this beautiful language effectively. Guys, ଆମେ ଗତ ମାନେ yesterday we have made a video, okay? ଆମେ ଗତକାଲି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମେ କ'ଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲେ ଯେ what are the problems faced by ଓଡ଼ିଆ medium school students to master English as a language and their possible remedies. ତାମାନେ ଓଡ଼ିଆ medium school student ମାନେ कौन कौन प्रॉब्लम फेस करती जो इंग्लिश से कहवाई स्टार्ट करती एंड व्हाट आर द वेरियस पॉसिबल व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस आमर कौन सॉल्यूशन अच्छी राइट तो आम किसी सॉल्यूशन आलोचना करते ओके सो वी हैव ऑलरेडी एम्फसाइज वन थिंग्स जे आमको वी हैव टू बी ए एक्शन टेकर आमको एक्शन इमिडिएटली नबार अच्छी राइट बिकॉज नाउ और नेवर ओके तो आमको एबे करियर अच्छी अदरवाइज इट विल बी वेरी लेट कहीं ना बर्तमान दिस इज इन एरा ऑफ कटथ्रोट कंपटीशंस आमर बर्तमान कटथ्रोट कंपटीशन एज चललानी ओके तुम जी देखिबो एक्चुअली फॉर 100 जॉब्स देयर विल बी 2000 एप्लिकेशन राइट तो जो मानकर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज अच्छी अपार्ट फ्रॉम योर आई मीन सर्टिफिकेट एंड अदर थिंग्स दे विल गेट द जॉब राइट तो आमको कौन करियर अच्छी एवरी टाइम रे we have to do something extra आमर किसी एक्स्ट्रा नॉलेज रहा दरकार तो मु ऑलरेडी कहि सारिछि जे आमे पूर्व वीडियो रे मते आलोचना करथिले जे एक्चुअली व्हाट वी हैव डिस्कस जदी गोटे एम्प्लॉयमेंट आई मीन पोर्टल गोटे न्यूज देछि जदी एक्चुअली 10टा जॉब बाहरुछि ताल 9टा जॉब रे आमर इंग्लिश टा को बेसी प्रायोरिटी दे जाउछि आई मीन तुम जो कम्युनिकेशन कर द कम्युनिकेशन शुड बी इन इंग्लिश एंड तुम प्रोफिशिएंसी टेस्ट हम कौन इंग्लिश रे राइट तो बर्तमान आज आम जो जिनटी आलोचना करने जाऊँगी इट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग ओके सो डेफिनेटली इट विल यू नो मोटिवेट यू टू स्पीक इंग्लिश तो आज आम मुख्य जिनस हूँ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन हैंड्स ऑफ अप्रोच एंड हैंड्स ऑन अप्रोच एंड हैंड्स ऑफ अप्रोच तो what do you mean by this two okay तो मैं गोटे एग्जांपल दूची तमे बुझी परिबो एक्चुअली इन माय इंटरेक्शन विथ सो मेनी स्टूडेंट्स मो बहुत पिलांक सहित इंटरेक्शन करे से मानकर इंग्लिश कोन पय बढ़ुनी तो से माने बहुत ग्रेजुएट पिला हुंतु बा प्रोफेशनल हुंतु और स्टूडेंट हुंतु से मानक से तुम कथार्थ हुए तो मोर मुख्य उद्देश्य थाए तो से माने ए इंग्लिश टा को सेकंड लैंग्वेज हिसाब पढ़िला पर मध्य से माने कोन पय इंग्लिश टा को आई मीन डे टू डे लाइफ रे व्यवहार करि पारंतिनी आ कोन प्रॉब्लम हुई तो आई गॉट ए डिफरेंट कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जो माने कहते सर एक्चुअली आपण जहाँ कहते इंग्लिश रे आमे बुझी परछु बा कोनसी गोटे लोक जते इंग्लिश रे कन्वर्सेशन करूची आमे बुझी परछु बट वी आर नॉट एबल टू रिप्लाई यू गॉट माय पॉइंट राइट नाउ तो क्वेश्चन इज दैट से माने सब जिंस बुझी पारन से माने रिप्लाई दे पारंतिनी सो एक्चुअली दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम्स एक्चुअली राइट तो ये प्रॉब्लम टा कौन रोची ये प्रॉब्लम टा रोची जे से माने इंग्लिश टा को बुझी पारंती बट दे आर नॉट एबल टू आंसर इट बट दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट दे आर नॉट एबल दे डोंट हैव एनी रिप्लाई ओके सो दे फील नर्वस ओके तो एथिरे कोन अछि एक्चुअली व्हाट इज द प्रॉब्लम एथिरे कोन पाई जिंसटा होची एंड व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशन जेतोले हमें इंग्लिश टा को गोटे हैंड्स ऑफ अप्रोच रे पढिबा तो सेही समय हमर कोन होबो ना ऑब्वियसली तमे इंग्लिश टा को भल बुझी परिबो बट कहि परिबोनी जेतोले तमे निजे इन्वॉल्वमेंट रसित रहिबो देन यू कैन स्पीक मु गोटे एग्जांपल दोउची जेतोले हम गोटे टीवी रे देखुचे फॉर एग्जांपल गोटे इंग्लिश न्यूज चैनल हम देखुचे ओके सो देयर आर सम पार्टिसिपेंट एंड देयर विल बी न्यूज होस्ट और एंकर तांको भितर आलोचना होची तो आमे सेटे बसी सुनुचे वी अंडरस्टैंड से मानक भितर कोन कथार्था होची जदी तमे टिक वेल वर्स इन इंग्लिश यू कैन इजीली अंडरस्टैंड किंतु तमे ता सहित कथार्था होर किछि माने वे नाही ओके बट तमर गोटे फ्रेंड अछि सपोज he is giving a call बा तमे गोटे कॉल पाउचो फ्रॉम समवेयर एल्स आउ से इज ए नॉन ओरिया ताकू ओडिया जणा नै तो तमे तले ता सहित कथार्था हबो तो सेही समय कोन होची एक्चुअली यू आर फोर्स्ड टू स्पीक इन इंग्लिश इवन इट्स ब्रोकन इंग्लिश राइट तो आमे कहछि इट्स ब्रोकन इंग्लिश मतलब यू हैव टू स्टार्ट इट ओके तो एठे प्रॉब्लम टा कोन होची गोटे होची हैंड्स ऑफ अप्रोच आ गोटे होची हैंड्स ऑन अप्रोच हैंड्स ऑफ अप्रोच रे तमे कोन करि परिबो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड इंग्लिश बट यू कैन नॉट स्पीक हैंड्स ऑन अप्रोच रे
तुम ये इंग्लीश टाक भल भाव बुझा सहित यू कैन ऑल्सो स्पीक तो एक्चुअली प्रॉब्लम कौन होचे ना जो आम जो भिजिटी स्किल टाक बारंबार फोकस कर वी हैव ए भिजिटी स्किल व्हाट इज भिजिटी स्किल V stands for vocabulary, G stands for grammar, and T stands for time and tense. Okay, तो time and tense and grammar and vocabulary ये तीन टाक भितर बेसी प्रायोरिटी आम कौटा दौरान ना vocabulary टाक तो vocabulary is the gold mine. Actually जदि आम vocabulary अधिक जानिबा आमर कन्वर्सेशन रे सेते फ्लुएंसी आसीबो आम कन्वर्सेशन रे सेतेटा माने आमे वी कैन हैव ए गुड कन्वर्सेशन विथ एनीबॉडी राइट तो आमर एटा हैंड्स ऑफ अप्रोच रे हमको सब काम करियर अछि तो मु कहितली हैंड्स ऑफ अप्रोच पई वी शुड नॉट बी ए म्यूट स्पेक्टेटर तो आमे कोन केवल खाली सुनिले गोटे जिंसटा कहनी यू हैव टू टेक एक्शन राइट अवे वी हैव टू टेक एक्शन राइट अवे तो हमको कोन करिवार अछि आमको जिते व्हेनेवर यू वांट टू स्टार्ट आमको छोटे छोटे एक्सप्रेशन नवा फॉर एग्जांपल आम जीवन में आम अनेक गुड़े छोटे छोटे एक्सप्रेशन शिखी मतलब जानते फॉर एग्जांपल व्हेनेवर यू आर मीटिंग योर टीचर तो हाउ यू आर सेइंग गुड मॉर्निंग सर सो दिस इज एन एक्सप्रेशन ऑल्सो तुम्हें जान गुड दैट्स एन एडजेक्टिव मॉर्निंग यू नो ऑल्सो एंड सर ऑल्सो यू नो द मोमेंट यू आर पुटिंग इट टुगेदर दैट बिकम्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू तो हाउ यू नो this is a WH word or also it's a I mean it's a verb and you also you know it's a subject तो जब आम कह हाउ आर यू इट गिव्स ए छोटे छोटे एक्सप्रेशन कहीं ना आमको बर्तमान एक्शन टेकर हबार अच्छी वी शुड नॉट बी मियर स्पेक्टेटर और वी हैव टू ओनली लिसन जदि आम खाली कौन गोटे जिन लिसन करवा से आमर इनवॉल्वमेंट रही दैट विल बी द हैंड्स ऑफ अप्रोच आवर हैंड्स ऑफ अप्रोच रे नो बडी हैज लर्न इंग्लिश सो फार आम इंग्लिश टा लर्न कर ना एंड सेकंड थिंग इज दैट नो why I am just giving emphasis always choose your mentor wisely तमे जो ठीक जाउचो इंग्लिश पढ़िया पई the person should be very well I mean he should have some experience hands on approach तार भी hands on approach थिबा दरकार because you will find many students many teachers से माने कोन करंती they are going to a teacher से माने कोन करंती ना गोटे बहिरु देखि पढ़ेबे आ they will learn in that way so that is not the that is also hands off approach. Suppose you ask me, I have 15-year experience in corporate, I mean field, so I know how to talk with my senior managers. I can talk with my juniors. I can talk with any corporate clients. तो जार hands on approach अच्छे hands on approach माने जोटा कि तमे निजे को निजे इन्वॉल्वमेंट है कि यूज करियो राइट तो ये तमे you have to I mean get involved yourself तुमको इथरे इन्वॉल्वमेंट हबार अच्छी लर्निंग लैंग्वेज एटा होची गोटे इट्स नॉट ए सिंपल थिंग्स आमे कोन भाबुचे जे गोटे आमे गोटे बही पढ़ी देले बा कोनोसी गोटे जिंस देखि देले दे वी कैन लर्न इंग्लिश वेरी फास्ट आउ आमे कोटे गोटे दीज आर द प्रोसेस हमर अनेक गोटे प्रोसेस अछि जेतो आमे कोनोसी गोटे लैंग्वेज सिखुचंती वी हैव सो मेनी प्रोसेसेस द प्रोसेसेस जो के प्रोसेसेस शुड बी डिफरेंट आल्सो काहे कि ना जेतो आमे देखुचंती अनेक गोटे प्रोसेस हम पाखे अछि हमको जो प्रोसेसटा सूट करिवो then we have to take there is no best process there is the right process because mu jodi kahibi je tame what is the difference between right process and best process kahi ki na amaro mentality from person to person varies tomar jo mentality more se mentality no x ro jo mentality y ro se mentality no to mentality anusare ame ko kariya padibo we have to take the right approach amar अनेक गुडी approach अछि because trust me that I'll be putting many videos on various approach आज हमें कुछ hands on approach hands off approach hands on approach रे we have to get involved we have to start taking action from the day one our hands off approach रे we have to only listen how the conversation goes so सेइथरे कोन हबो you will be a good listener you can understand but you cannot speak तो एठे कोन अछि that whatever if you understand something that is not more important that's okay 50% of your I mean problem is solved but what about the another 50% for the another 50% you have to be a action taker माने तुमको एक्शन नहीं कि काम करिया पर you have to take action immediately right away you have to take action तो हम काली भी कहिथिले आज भी कहूची that every time what you have to do you have to start taking action immediately don't be the daydreamer okay so don't worry we'll be putting more videos on this on different topic like how to improve your VGT skills how to attend fluency what are the various expressions what are the day expressions that how can you use in a day to day your conversation so this is the time so I want to tell you guys
whenever I am telling you to learn English as a skill, just it should, if you just change your mentality, ତମେ ଯଦି ତମ mentality ଟାକୁ change କରିଦଉଛ, then you can easily understand what is English and how can you learn it. ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଇଂଲିଶ ଟା ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଦେଖୁଛ, you are not in a position or you will not learn this language as a skill. ତ ଆମକୁ ଏଠୁ ସ୍କିଲ୍ ହିସାବରେ ପଢ଼ିବାର ଅଛି. ଓକେ, ସୋ वी हैव डन मेनी वीडियोज, विल बी कम विथ सो मेनी वीडियोज ऑल्सो. आज आम इस वीडियो जहाँ मु आलोचना कली हैंड्स ऑन एंड हैंड्स ऑफ अप्रोच, I hope it is, it is going to inspire you to take English as a skill and learn it in an effective way and speak also in an effective manner. Okay, so I'll come with a new video in the next time. Till then, bye, take care, see you.